What is up? What is up? What is up? What is up? What is up, guys? जल्दी जल्दी छेती छेती आ जाओ सारे बैठेंगे लाइफ पे हम अपने प्यारे कम ऑन। तो जी हाँ गाइस, वी आर बैक लाइव। आज जल्दी लाइव आ गए हैं, थोड़ा टाइम नहीं लगाया मैंने भाई, क्योंकि बहुत बेकार लगता है पीपल्स को टाइम लगवाने के लिए। भाई खड़े रखो भाई, और कैमरा थोड़ा सा पास कर लेता हूँ। और कैसी है मेरी पब्लिक? सॉरी गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड मेरा ऐसी ऑफुल रहता है भाई, लड़का हूँ भाई, सीधी बात। और धीरे धीरे ग्रो होंगे भाई, एकदम ग्रो नहीं होंगे भाई। देखो, कुछ दिनों पहले वहां कुछ भी नहीं था पीछे, लेकिन अब धीरे धीरे एक नियॉन लाइटिंग आ रही है। अब धीरे धीरे अपग्रेड होता है भाई चीजें। एकदम अपग्रेड होगी तो फिर ये सब नहीं चलता ना भाई, एकदम अपग्रेड में तो नुकसान है भाई। तो कहाँ थे हम? जी हाँ, हम थे अपने गेम में, जिसको कहते हैं हम हॉगवर्ट्स लेगेसी। और आज हम पूरा हॉगवर्ट्स लेगेसी जितना भी हमसे हो पाएगा उतना हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे एडिशनल कंटेंट, और फिर प्ले मोड्स पे हम थोड़ा अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले पूरा गेम खत्म करेंगे, उसके बाद में, क्योंकि अपन जो भी गेम पकड़ते हैं पूरा पूरा खत्म करते हैं, पूरा खत्म करते हैं। तो कैसी है मेरी पब्लिक और कैसे है मेरे लोग, मेरे अपने? तो आज हम करेंगे चैट पे ग्राइंड। पर आज कोई दिख नहीं रहा मुझे, क्या हो गया भाई? किधर है सब? कितने कितने हैं भाई? कितने हैं लोग? कितने हैं भाई? कहाँ हो सब? क्या अपनी जॉब में मर रहे हो या अपने बिजनेस में थक रहे हो? आ जाओ, थोड़ा टाइम पास कर लो अपने भाई के साथ में गेम प्ले देख के, तो भी हो जाओ खुश और हम भी हो जाएंगे खुश, क्योंकि आप ही के प्यार से तो हमारा घर चलता है वो। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। कुछ दिनों में गाइस मैं मेरे नीचे का ओवरले चेंज करूंगा, उसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, क्या बोल सकते हैं उसको, एक रहता है ना कि हाउ टू गेट अ हेल्प, मतलब थोड़ा सा फंडिंग्स फंडिंग्स की मदद मिलेगी तो अच्छा रहेगा, अपना घर भी चलेगा। लेट्स गो। ऐसा बोला तो चाहता है, लेकिन बट ठीक है, वही है जो है, सच है। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता गाइस। सच सच होता है। ये भी एक जॉब ही है, कंटेंट दे रहे हूँ आप लोगों को, निकाल निकाल के, खदोड़ खदोड़ करके, घुसेड़ घुसेड़ करके। भाई मुझे आज का वो, मतलब वैसे तो मैं देखता नहीं हूँ सीरियल वगैरह, बट वो जो ट्रेंडिंग सीरियल का डायलॉग चल रहा है, घसीट घसीट के मारूंगी, उठा उठा के मारूंगी, दबा दबा के मारूंगी, निचोड़ निचोड़ के मारूंगी। और क्या था भाई, मतलब अगर हाथों से थक जाऊंगी तो लातों से मारूंगी, और अगर लाते से भी थक जाऊंगी तो भाई क्या कर रहा बोली थी भाई इसने, कि भाई गालियों से मारूंगी भाई, गालियों से। लेट्स गो भाई, गालियों से कोई मरता है भाई, लेकिन भाई वो मारेगा भाई। लेट्स गो भाई, हम कहाँ आ गए हैं अभी? हम लोग कहाँ है बे? अच्छा, हम कासल के अंदर ही हैं, कासल के अंदर ही हैं। एक सेकंड भाई, ये हर बार ग्राफिक को क्या हो जाता है भाई? अपने आप रीसेट क्यों जाता है? मैं जब सही करता हूँ तो फिर रीसेट हो जाता है भाई। दिस इज नॉट फेयर भाई, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई, ऑटो सेट नहीं चलेगा भाई। मैं बनाता हूँ भाई, वो अपने आप ऑटो रीलोड हो जाता है भाई। ग्राफिक्स इसमें थे क्या? ये भी सही था। ये फ्रेम रेट मैंने बढ़ा दिए थे। मोशन ब्लर मैं ऑफ कर दूंगा भाई, मेरे को बिल्कुल वो यूं यूं होना बेकार लग रहा है भाई। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। लो लो रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड पे ही था ना पहले, बट वो कहाँ गया? ये तो नहीं भाई, ये भी नहीं था, इसी में था शायद। वीसिंग कौन था? लो लेटेंसी मोड। पहले रीसेट टू डिफॉल्ट करता हूँ, उसके बाद में थोड़ा कुछ सही कर पाऊंगा। 154 FPS था ना? बैक कर, ब्लर ऑफ बस। अभी ये ऐसा दिख रहा है ना, पहले नहीं दिखता था ऐसा। हर बार भाई मैं, मतलब गेम चालू करने से पहले भाई मेरे को सेटिंग की, मतलब क्या है ये भाई? दिस इज नॉट फेयर ब्रो। दूसरा वाला मॉनिटर नहीं लगाना है। लो लेटेंसी, एंटी अलाइजिंग, लो पे ठीक है। मोशन ब्लर कहाँ था? ये था ना, मोशन ब्लर ऑफ कर दो। FPS थोड़े से बढ़ा देता हूँ।
मिलना है नहीं, लेकिन 360 रख ही देता हूँ, मिलना तो है नहीं वैसे भी। TTA लो पे ठीक है, ग्राफिक्स रिकमेंडेड, लो मीडियम हाई, मीडियम रख के देखते हैं आज। आज अप्लाई करते हैं मीडियम। लग रहा है इसी के चक्कर में है वो, जो तो होता है हर बार। तो हाई रखो। थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, बट ओके। अब ठीक चल रहा है। ओह, रिवेलियो। और कुछ रेयर चीज है क्या? कुछ तो रिवील हो रहा है। कुछ तो रिवील और हो रहा है। सब कुछ कलेक्ट कर लूं क्या एक ही बार में? मिशन करूं कि कलेक्ट करते चलूं? यहाँ बस इतना ही था। उस साइड क्या है? ये क्या था? कुछ और भी रिवील हो रहा है, पर दिख नहीं रहा। कुछ और रिवील हो रहा है बट दिख नहीं रहा। कुछ तो हो रहा है रिवील। हाँ, ये हो रहा है। कुछ और भी रिवील हो रहा है यहाँ पे। कहीं तो घंटी बज रही है भाई। नीचे बज रही है, कहीं तो बज रही है। ऊपर। ओ, ये क्या था? ओ, मेरे गियर फुल है। कुछ मिल रहा है? गियर्स 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 गियर्स। इसमें तो अभी और भी जगह है भाई, आराम से आ जाएगा इसमें। ये भरा हुआ है ना, तो मैं ये लगा लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं सी। ये खाली कर दिया। ये मुझे 20 का बूस्ट देगा और ये 20 का बूस्ट देगा, तो इसको कर देता हूँ मैं सी। ये इसको भी सी कर देता हूँ, इसको भी सी कर देता हूँ। ये लगा हुआ बस। और क्या है? ये मेरे को दे रहा है कैपेसिटी, नीचे कर रहा है ना, तो बाकी सब फालतू की चीज़ें हटाते चलो ना भाई। पैसे आएंगे, खरीदते जाएंगे। फालतू की चीज़ें भी हटाते चलो। अभी एक ही उपाय कर लो, जो जो काम का है वो काम का रखे रहो, बाकी सब हटाते चलो। ये क्या है? कुछ इनविजिबल ही है ये, छोड़ो। वो ये 30 का दे रहा है, मैंने पहना ही नहीं था, बताओ। ये तो पहनना पड़ेगा भाई। 30 का दे रहा है भाई, बोनस पड़ रहा है, हेल्थ और डिफेंस दोनों ऊपर जा रहा है। मैं हैट वैट पहनने की इच्छा नहीं होती है, इसमें पहनता नहीं हूँ। भले ही सिर पे गोली लग जाए 3 बार में मर जाऊँ, लेकिन नको भाई है, ऐसी हैट नहीं चाहिए मैं। फिर से क्लोक मिला है। किससे आता था भाई वो? हाँ, गियर। फिर से क्लोक मिला है कोई सा। ये 14 का देता है ना, ये जाएगा 25 का। ये हटाओ।
या कुछ हुआ, कुछ था। ये खोलना अभी तक नहीं आया मेरे को। इंसेंडियो तो नहीं है? Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. इसको खोलते कैसे हैं? Accio. Levioso. नहीं खोलते कैसे हैं इसको? Revelio. छोड़ो भाई, नहीं खुल रहा। अलहमोरा होगा। ओ ये क्या है? क्रेजी, मैं यहाँ कहाँ आ गया भाई? ओ कूल भाई, फ्रॉग्स आर सिंगिंग। ओ यहाँ पर भी है क्या? क्रेजी भाई। और कुछ है यहाँ पे? कुछ मिल रहा है? ओ क्या था ये? ऊपर जाने का रास्ता है। Revelio. मैं तो सब चीजें कलेक्ट करूंगा भाई। ये क्या है? ओ लेवल लॉक है। अल्लाह मोरा करना चाहिए था, बट वो आता नहीं है अभी। ये क्या है? कुछ तो है इसमें। Levioso. लेवियोसा करना पड़ेगा इसको। फिर कहीं चिपकाना है क्या? जोड़ना है एक्यो करके? एक्यो। Accio. ओ कहीं लेके जाना है इसको। मैं समझ गया। कहाँ है वो? Where is that bell? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। Accio. आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। ओ पहले लेवियोसा। Levioso. हाँ, फिर इधर से आके एक्यो। एक्यो। ओ मुझे दबा। नहीं Levioso. नहीं 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 भाई बहुत नीचे गया भाई, बहुत नीचे गया, बहुत नीचे गया भाई, बहुत नीचे गया भाई, बहुत नीचे गया भाई, नीचे गिर गया वो। ओ भाई साहब, गंदा वाला। उड़ रहा है क्या? अरे भाऊ, ब्रदर, ब्रो, इकड़े, इधर, किधर भाई? गलत भाई, बहुत गलत गया भाई। गुस्सा आ गई, गुस्सा गुस्सा आ गई मेरे को भाई। लेवी Levioso. ओ सा। Accio. चलो भाई, मैं तो ऊपर भागते जा रहा हूँ, अगर आना हो तो आएगा। जल्दी आ भाई। आ गया, आ गया, आ गया, आजा। यस यस, कम ऑन बेबी, कम ऑन। यस कम ऑन। यही तो नहीं करना है। अबे कहाँ चला गया घंटा? Accio.
Levioso. Accio. Yes, yes, come on, babu. मेरे को लगाना कहाँ पर है? एक, अरे दो है, एक और को ढूंढना पड़ेगा पहले। Accio. हाँ, मैं फिर अटक गया। भाई यहाँ ले तो आता हूँ भाई। भाई यार रख दो भाई, इसको रख दो यहाँ लाके। एक और कहाँ है? ऊपर ढूंढना पड़ेगा क्या? ऊपर है क्या? Revelio. ओह, एक कार्ड मिला मुझे। ओह, ये क्या है? ओह, मैं कहाँ एंटर हो गया? ओह, मैं दूसरी बिल्डिंग में टेलीपोर्ट हो गया। वाह भाई, क्रेजी। यहाँ से मैं दूसरी बिल्डिंग में टेलीपोर्ट हो गया। ओह, ये कुछ मिला है मेरे को। अच्छा है, ये भी कुछ मिला है। कुछ कार्ड वार्ड मिल रहा है, कलेक्ट करते चलना पड़ेगा। काम की चीज लग रही है भाई। गेट वेट है यहाँ से अंदर जाने का, वो भी रेवेलियो करके ढूंढना पड़ेगा। Revelio. गेट ही नहीं है, वापस वहीं कूदना पड़ेगा। टीपी पे टीपी खेलना पड़ेगा। और अब मैं दूसरी साइड आ गया हूँ, किसी दूसरी एरिया की। ओह, कुछ क्रेजी मिला है ब्रो, कुछ क्रेजी मिला है, देखना पड़ेगा। ये क्या है? लेजेंडरी चीज मिला है, लेकिन अभी खुल नहीं सकता। टेक दिस टू द रूम ऑफ रिक्रूटमेंट टू रिवील इट्स क्वालिटीज। अब भाई ये रूम तो ढूंढना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मेरे को एक वुड मिला है। ये वुड वाला अच्छा लग रहा है, क्लासिक भी है, बढ़िया लग रहा है। Revelio. और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, ये गेट भी नहीं है तो। एक बेल यहाँ पर है। ओह, एक बेल यही है। Accio. Levioso. Accio. Levioso. ओह, मेरे को साइज के हिसाब से लगाना है क्या? ओके, यहाँ पर एक मिसिंग था कहीं, यहाँ पर एक कहीं मिसिंग था, कोई एक बेल मिसिंग था यहाँ पर। ये यहाँ से ऊपर आए, यहाँ पर सब ठीक था। दो थे ना यहाँ पे। हाँ, ये है शायद, नहीं ये। यहाँ पे एक मिसिंग है और इसके ऊपर एक। हाँ ठीक है, ये बड़ा वाला शायद लगेगा। बड़ा वाला शायद लगेगा, बड़ा वाला शायद इधर लगेगा आई थिंक, ये ऊपर में। भाई लेकिन मैं उधर से कैसे खींचूंगा यार इसको? बुलाऊंगा अपने उधर, उधर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे करूंगा। बट ये छोटा वाला तो लगा देता हूँ यहाँ पे। छोटे से बड़ा गया है ना, बड़े से छोटा। हाँ ठीक है, पहले ये करते हैं, इसको उठाते हैं। Levioso.
यहाँ खड़े कैसे हुए हैं? ओके ओके, हो गया मैं। अबे गिर गया मैं। थोड़ा सा कम हिलना है वहाँ पे खड़े होकर। सोनम वारे सोनम। भाई मैं पोस्टर लेते समय गिरता क्यों? अरे बैंड बज गई। नीचे गया तो बहुत बुरा जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक्चुअल देखा। One up, one to go. क्रेजी भाई। अब उस वाले को कहाँ लगाना है? उस वाले को यहाँ लगाना है। तो अपन उसको लेकर आएंगे यहाँ पर। ऊपर से खड़े ऊपर कहीं खड़े होने का है क्या? ऊपर कहीं खड़े होने का है? नहीं, वही वैसे ही करना पड़ेगा। उसको पहले थोड़ा खड़े करके इधर लाता हूँ। खड़े करके एक्शन। थोड़ा सा एक्यो हटाओ। अब इधर जाना है। अरे भाई ऐसी पकड़ पकड़ के नीचे ले आऊं क्या? क्या पता लग जाए। ओह, उसका असर खत्म हो गया। Levioso. Accio. अरे मैं अटक गया हूँ क्या? अरे एक दूर फेंकने वाला था ना, वो स्पेल क्या था भाई? वो दूर फेंकने वाला स्पेल, वो मैंने सीखा ही नहीं यहाँ हूँ भाई। अरे यार वो सीखा ही नहीं है यार, दूर फेंकने वाला। या तो भाई रिपेयरो नहीं कर सकता क्या मैं? एक सेकेंड, एक्यो करके इसको यहीं पे रखूं। Levioso. उधर एडजस्ट कैसे जाऊं भाई? मैं समझ नहीं पा रहा, मैं इधर चढ़ूं कैसे ब्रो? थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ग्लिच करूं क्या कुछ? चलो ग्लिच करके चलो। आया मैं इधर। Accio. प्रॉपर बैठाना पड़ेगा भाई उसको वहां पर। ना भाई यहाँ से गिरा मरी जाऊंगा, खत्म हो जाएगा खेल। खेल खत्म हो जाएगा भाई। खीर पूड़ी मिलेगी फिर रिश्तेदारों को। अरे भाई हेलो, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ओए क्या हुआ तेरे को? Levioso. वही भाई, ज्यादा खीर पूड़ी खा ली क्या? Accio.
भाई लग जा। वो यहाँ पे खड़ा हुआ था वो। लग जा भैया घंटा घनार्दन। भाई कुछ तो करूं। मेरे को ये भाई मैं अटक गया हूँ मिशन में चक्कर में। बस बहुत शानदार। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बस बस। क्यों खोला मैंने? अब मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा अब उधर की जंपी जंपी फेंकूंगा इसको मैं। बस मैं ना गिरूंगा। वो रखा है बेल, है ना? अब दिमाग लगा के मुझे उसको इसमें जोड़ना है, तो मुझे उधर से आना पड़ेगा, उधर से देखना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। अरे नहीं रे, उधर पे खड़े होने का है, कैसे खड़ूं? इधर पे जाने का रास्ता नहीं है, इधर से आने का है। प्लेटफॉर्म मिल जाए भाई, मैं क्रेजी कुछ हंगामा कर दूं मैं। भाई कैसे करूं भाई? भाई मेरा बंदा, हाँ ये अंधा नहीं हुआ, देख रहा है देख रहा है देखने। Levioso. Accio. कहाँ है भाई वो? अरे यार भाई जब पोजीशन मिली तब बंदा ही नहीं मिल रहा, घंटा ही नहीं मिल रहा भाई। घंटा भाई, घंटा घनार्दन। भाई इसको कैसे करता है? प्रोटेगो तो ये था। Revelio. अबे रिपेयरो था ना, क्या था भाई वो? टी निकाल करके इसको इंसेंडियो की जगह। Reparo. भाई रिपेयरो तो रिपेयर हो जाना चाहिए भाई। हाँ नहीं हो रहा, गलत बात भाई, धोखा है भाई, धोखा है। Levioso. Accio. धोखा ब्रो, धोखा, इट्स धोखा ब्रो। धोखा है भाई। Levioso. क्या इतना ही उड़ेगा क्या? इससे ज्यादा नहीं उड़ सकता क्या? Expelliarmus. एक्सपेलियार्मस में दूर जाना चाहिए ब्रो। Reparo. भाई रिपेयर क्यों नहीं हो रहा भाई? भाई मैजिक होने के बाद में भी मैं ये नहीं कर पा रहा, तो भाई बहुत बड़ी बात है। नूबड़ा हुआ है भाई। Levioso. लो भाई वो हो ही नहीं रहा। कहना चाह रहा भाई तू नूबड़ा है, तेरे से ना हो पाया। भाई सही बोल लिया भाई, मैं नूबड़ा हूँ भाई। भाई मैं करके ही जाऊंगा, मेरे को खुजली हो जाती है ना किसी चीज की। भाई अब नहीं हो रहा, मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा भाई। रुक जाओ। मुझे जाना पड़ेगा उधर कहीं। मुझे चढ़ना पड़ेगा इधर।
चढ़ जा भाई। भाई इससे ऊपर कहाँ चढ़ूं मैं? अरे यहाँ आ गया यार। लग गया, लग गया क्या? लगा क्या? नहीं लगा तो गया कहाँ वो? गिर गया भाई, वो नीचे गिर गया। कुछ कच्चे से तो आवाज आया था ब्रो। पता नहीं ब्रो, मैं तो जा रहा भाई मिशन करने। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया भाई इसमें। 15-20 मिनट तो मैंने इसी में फालतू में वेस्ट कर दिया भाई। इससे अच्छा मिशन हो जाता अब तक तो भाई। क्रेजी भाई, इतनी देर में तो मिशन कंप्लीट कर देता भाई मैं। बेकार भाई, बेकार टाइम पास भाई। Excuse me. भाई पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, भूख लग रही है यार। जिम नहीं जा रहा हूँ तो भूख लगने लग रही है गाइस। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन भाई मैं खा रहा हूँ, तो शाउट आउट तो मेरे को ही मिलना चाहिए वैसे तो। भूख लग रही है भाई, कुछ तो खाना पड़ेगा ना यार भाई भूख लगने में। वो गिरना नहीं हुआ है, मैं दिन भर का कोटा है तू। वो फ्लाइंग क्लास का मिशन आया। इतना जल्दी मुंह पे लग गया? थोड़ा भी तो खाया था। Revelio. और कुछ? ओ ग्रूम मिलेगी उड़ने के लिए, वाह क्रेजी। फ्लाइंग क्लास। Begin. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal Hey. of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players.
like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! Up. Crazy. एक बार में. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. कुछ तो गड़बड़ होने वाला. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Excellent. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? मतलब वो होगी रेस. जिस रेस में मेरा कोई हाथ नहीं. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Crazy man. What a view! Hello! Nice day for a flight! Made it! Did anyone else see that? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? रेस का बोलेगा यार. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? भाई सब सीधी बात करो, नो Kagawa बकवास करो. seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens.
The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. B से dismount. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. मार्क्स भी काट के तारीफ भी करके जा रही है ऐसी प्रोफेसर सब कुछ ही भाई. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. मेरे को फाइन नहीं दबाऊंगा. और मुझे खरीदनी पड़ेगी. मैंने सीखा हूँ अभी मुझे खरीदनी पड़ेगी. ओके क्या पता क्वेस्ट आ गया खरीदने के लिए. ओ डिपल्सो काम आएगा. तो मैं फ्रॉग वाले चेम्बर में जा करके वो घंटे को वापस लगा दूंगा. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. चलते हैं भाई. पहले ये सीखते हैं उसके बाद प्रोफेसर वीजली से मिलेंगे. भाई सारे स्पेल सीख लो. ऐसे घंटे घंटे का मिशन आया तो करना पड़ेगा ना. पापा रिवॉर्ड में अच्छी चीज मिल जाए.
भूख लग रही है भाई, खाते खाते खेलूंगा मैं। मेरी पब्लिक भाई बिल्कुल देसी है भाई, बट हाँ स्टिल मैं आप लोग को यही बोलूंगा, सिविक सेंस मेंटेन करके रखे। आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है सिविक सेंस। सिविक सेंस मेंटेन करके चले, प्रॉपर प्रोपेगेंडा को मेंटेन करें। मुझे बुरा लगता है यार भाई किसी के लिए जब सिविक सेंस के लिए उसकी भाई वीडियो बना दी जाती है, कर्री वाली वीडियो बना दी जाती है। इसकी मतलब मैं क्या बताऊं, छेद दिया आता है भाई बेचारे को। उसका कहना यही था कि भाई मेरी वीडियो में पीछे से आ गया चला गया। Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Don't you know who am I? From everyone at school hates for no reason. क्यों? Everyone hates you. हाँ क्यों नफरत? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Cute, yeah. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. तो कभी ना कभी ढूंढ ढांड के मैं इसको लौटा दिया करूँ। अभी जाना है? ओ भैया कितने हैं? 12 से 13 है भाई। टीपी ले लूँगा। खुल जा सिम्मा। I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. वो क्या है? The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. अब मैं ये करूं वो करूं मैं क्या क्या करूं भाई? If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. भाई मैं क्या क्या करूं? गॉबस्टोन नहीं छू। I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
हाँ भाई बेचारी के गॉबस्टोन्स लाना था। Revelio. इधर कहीं छुपाया है बेचारी के गॉबस्टोन, वो रहा भाई। Accio. Levioso. Reparo. Expelliarmus. Reparo. Accio. Levioso. पास जाना है यार। Revelio. यहाँ पर तो है। हाँ तो भाई किया था ना। Levioso. Accio. Levioso. Accio. क्या करूँ मैं? अरे तो मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा? Levioso. Accio. क्या मुझे पहले वो वाला मिशन लगाना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ है क्या? दो मिशन एक साथ चल गए क्या क्वेस्ट के? हाँ दो एक साथ हो गए क्वेस्ट। प्रोफेसर फाइट मॉन्स्टर्स कैच द फेम गॉब स्टोन्स, ये रहा, ये लगाना पड़ेगा। अब होगा वो, अब मैं ले पाऊंगा उसको आई थिंक। Revelio. Accio. Reparo. कैसे जाऊं ऊपर? कैसे जाऊं ऊपर? Brilliant work beating everyone across once. ऊपर जाऊं कैसे मैं उधर? मेरे पास में वॉन्ड है। एन क्यों दबा दिया मैंने? वो कोर क्या है? भाई इसको बाद में करूंगा, मेन मिशन करता हूँ अभी। तो हटाओ, बच्ची का मिशन बाद में करूंगा। खुल जा सिम सिम। सेबेस्टियन से मिलना है ना, ये करो अभी तो। पहले ट्रेस बाद में करेंगे, बच्चों सारे मिशन कर दूंगा भाई बाद में। साइड मिशन सारे होंगे भाई। सारे काम साला रात में ही कराता है मुझसे, चोर कहीं का। खून में ही है, स्लिथरिन का ही खून है भाई। Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. चलना भाई तो। There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. Revelio. I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day he I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology?
I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Okay. Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. ये कहाँ ये है Confringo? Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think... Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You're getting it. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Slytherin इतने बुरे भी नहीं होते जितने लगते हैं. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity.
Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Crazy, right? Okay, hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. I promise not to say anything. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place, and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. भाई इसको ही तो मैं बताऊं. Revelio. कुछ तो है, कुछ तो रिवील हुआ. कुछ तो हो रहा है. ये रही. गॉब स्टोन्स यार, इस बच्ची के गॉब स्टोन्स ढूंढने यार. Revelio. I wonder if you might be able to help me with a small project. नहीं करना. मेरे को वैसे ही बहुत सारे क्वेस्ट पड़े हुए मेरे पास में भाई. एक क्वेस्ट करता रहूंगा भाई तो मेन क्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा. मेन क्वेस्ट ही तो अटक रहा है भाई. वो मेन क्वेस्ट करना है, उसके चक्कर में तो हो ही नहीं पा रहा भाई. क्या बड़ा हॉगवर्ट्स है भाई, कर्रा लगता है. Revelio. कुछ तो है. इधर ही आ रही घंटी के बाद. ये रही. Oi! Revelio. Can you help me? किधर? अरे किधर बज रहा है? ऊपर बज रहा है. Oh, Kitty, cute Kitty. Oh, rawr, Kitty.
Confringo! कैसे खोलूं इसको, मैं समझ में नहीं आता, हर बार यहीं आके रुकता हूँ। Revelio. बहुत कुछ है अंदर, पता है उस डोर में, माल निकालने के लिए माल। Levioso. Revelio. ऊपर है। इधर है, ये रहा। Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. ये खुला कैसे भाई? बिना इंचांटमेंट के तो खुलता ही नहीं है। उस बंदे ने कुछ बोला भी नहीं भाई, मेरे कैरेक्टर ने कुछ बोला भी नहीं। ऐसा होता ही नहीं है कभी भाई, बिना वॉन्ड मैजिक के ये डोर खुलता ही नहीं। या तो जरूरत ना हो तब तक ये खुलता ही नहीं, या तो कोई पासवर्ड ना हो तब तक खुलता नहीं। क्यों नहीं देखते हैं भाई लोग, क्यों नहीं देखते हैं भाई? छोटे मोटे यूट्यूबर को देखा नहीं चाहिए भाई? देख लो, मेरे को भी देख लो, वॉचिंग दे दो भाई, गरीब को वॉचिंग दे दो, गरीब को वॉचिंग भाई। सब्सक्राइब कर दो यार, कैसे करते हो भाई? What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom, your first day. Revelio. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ठीक है, Evanesco, crazy भाई। Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. अब Evanesco दिखता कैसे? वो बबली बबली दिखता है ना? ओके ठीक है, Evanesco. Excellent work.
You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still... Revelio. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. वो यहीं से नहीं मार सकता क्या? मैं मेरे को लगाना ही पड़ेगा क्या? कहाँ जाने के लिए निकाल? Revelio. ओह, थोड़ा सा निकालना था, बट इट्स ओके. Revelio. चलो ग्लव्स मिले, गियर अपडेट कर देते हैं. नहीं, गलती से टैब दब गया. गलती से टैब दब गया, वो पूरा पोशन खराब हो गया यार. शिट भाई, वो पोशन बहुत काम का था. अरे यार, क्यों होता है ऐसा मेरे साथ ही? और भी आएगा कुछ क्या? भाई अच्छा खासा Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. Bit often the room thought I need a bath. Check things. Check things. Only things, right? Check things. Okay. Is it worth it? Nah, it is not. Let's go and find some more things. Oh. Crazy, bro. Revelio. Revelio. Anything here? Revelio. 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 How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. Levioso.
What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your... Leviosa! Find out! Revelio. Leviosa! Revelio. Oh. Confringo. Accio. Revelio. ना तो कुछ भी नहीं है ब्रो. वो रास्ते से जाना चाहिए मेरे को. शॉर्टकट बेकार चीज है. Revelio. I hope that house elf can find us in here. अब फाइट होगी. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. क्रेजी एनिमेशन भाई, क्रेजी एनिमेशन. इसको अगर हाई क्वालिटी पे होता मेरे पास तो भाई क्रेजी लगता रे. ओ भाई साहब, डेडली. You've given yourself quite a canvas to work with. क्या खुशी थी I मोंडे के look चेहरे. forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Identify.
You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I don't have anything for this at the moment. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा टफ है ये वाला. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. So yeah. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjuring the table, T दबाओ. Exchange करो. और यहाँ पे रखूंगा मैं Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I do like to know more about Deke. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use transfiguration magic anywhere? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement
has its own rules. यहाँ कर सकता हूँ मतलब. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. ये बढ़िया था यार. अच्छे मैजिक सीखने मिल रहे हैं. क्रेजी मैजिक सीखने मिल रहा है. डेस्टिनी बन रही है. बनने दो. ये क्या था? ओके. बौखलाने दो उसको. बौखला रही है. बौखलाने दो. हाय. ओ चेस खेलने के लिए. Nothing to identify. For now, at least. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. भाई बहुत है भाई मेरे पास. I would like to teach you Wingardium. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Good work. Shall we move on?
conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. भाई डेमोन्स्ट्रेट बोली थी, मेरे को लगा कि वो करके बताएगी, मेरे को यहाँ करना पड़ रहा है. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. टी दबाओ, टी दबाने के बाद में ऑल्ट्रेशन को इस पर डाल दो, उसके बाद में कलर कहाँ से बदलेंगे? ओ F2 चेंज कलर. Revelio. I have some questions about alteration, Professor. Yes? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. Adjust the size of an item. भाई पहले तो मेरे को वो करना पड़ेगा, पहले तो बनाना पड़ेगा. यहाँ पर मुझे कुछ लगाना था. नहीं भाई ये नहीं था, ये भी नहीं था. हाँ ये था. इसमें ये दो पति पत्नी प्यार किया तो डरना क्या. कम ऑन, ये कंप्लीट हो गया. अब एडजस्ट द साइज ऑफ एन आइटम, तो साइज करना पड़ेगा मुझे. एक्स टू इंक्रीज द साइज. चेंज द कलर ऑफ एन आइटम. भाई आइटम का कलर F से. अच्छा इसका आइटम नहीं कर सकता, इसका कर सकता हूँ. इसका कलर बदल के Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Levioso!
alter the balcony. Alteration वाला spell कौन सा था? ये वाला जो conjuring था. क्या है? balcony और floor room. हाँ floor room भाई. हाँ floor room. ये हाँ ये हो सकता है. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. वाह भाई क्रेजी लग रहा भाई. क्रेजी लग रहा भाई. ये है थोड़ा एस्थेटिक माहौल भाई. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. भाई मुझे आ रहा है कॉल गाइस. मुझे आ रहा है कॉल. वी विल जस्ट स्टे हियर. मतलब हम यहाँ पे रुकेंगे. वी विल जस्ट स्टे हियर एंड आई विल बी राइट बैक. आई विल गोना talk to that person who is calling me. Let me see, let me check what's happening. We will be right back guys. कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं. कोई कहीं नहीं जा रहा है. सब यहीं हैं. सब अपने हैं. अपने हैं तो अपने होते हैं. Like it's a relative. It's a small relative, guys. Cousin. He was calling. It's okay. It's okay. I will talk to him later. Don't want to miss my excitement towards Hogwarts, so I will talk to him later. But right now, we are playing live at Hogwarts Legacy, guys. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Oh, am I visible? Like, oh, yeah, I'm visible. Oh, okay, so where were we? Where were we, bhai? Where were we? Oh yeah, we are here. So now we are going to have some missions. Quests. These are assignments I have to complete, acquire, and use a Wismush Dracula. It's something like a plant. ये पक्का वाला प्रोफेसर ने दिया होगा. हर्बोलॉजी वाली ने. अब दूसरा क्या था? हाँ, एक्वायर और हाँ एक्वायर एंड यूज अ फोकस पोशन बनाना पड़ेगा. एक्वायर मैक्सिमा एंड एंड्योरेंस पोशन एंड यूज देम साइमल्टेनियसली. ओके, अपन देखते हैं यहाँ पे अपन
पोशन बनाने का था ना वो मशीन, कहाँ गया वो मशीन? पोशन ये रहा यार। ये है एक फोकस पोशन, ये तो लॉक है, can't make it, it's locked, totally locked. Inventory, what I got? Okay, what about the gears, bro? I got something, I know I got something. Oh, it's a downgrade thing, it's a downgrade thing, I should sell it. गियर में और क्या दिख रहा है? हैट, गॉट अ हैट। Should sell this one. I don't want to wear a hat. Not my genre. Let me go to the quest. Let me track that quest. Let me jump to that quest on the map. And I'm free to go, bro. सीक्रेट रूम से हम निकल चुके हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं मिशन करने। मिशन गोइंग टू हैव सम मिशन। लाइक कर दो गाइस, सब्सक्राइब कर दो गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब। It takes little bit time to load, but it's worth it. The game is worth it. Game is worth it. Seems to be his cup of tea. Revelio. Anything is hidden. I am not getting it where it is hidden, but I want to catch it. Hello there. Perhaps you can help me. I want to catch it. Let it be. You're defending Hogsmeade against trolls. Open up Sesame. Revelio. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. वो बुक कहाँ है यार? वो बुक तो बुड्ढा ही ले गया था, यही तो ले गया था, प्रोफेसर ही तो ले गया था। मतलब बुक वाज लाइक कहाँ है यार, कब मिलेगी बुक भाई? इस बुक के ही तो इतने लफड़े हैं यार। The room is called the Map Chamber, by the way.
And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this time. Crazy भाई. This looks promising. Wow. Editing भाई. Graphic designing. Crazy designing भाई. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. उसको उसकी बीवी की याद आ गई यार. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill
and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I believe I have. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Do you know anything about the tower? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Revelio. Leviosa. Leviosa. Accio. ये अलाउ नहीं है ना यहाँ करना. Revelio. खुल जाओ. Open up, Sesame. नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं. Revelio. Come now, Annabelle. It was a long time ago. I'm sorry. I'm sorry. Let us keep. उधर बज रहा है. Revelio. यही कहीं है. यही कहीं है. दिख क्यों नहीं रहा? बजा था अभी. Revelio. बजा था. यही कहीं है. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. बहुत पास में.
बच तो यहीं रहा है। बच तो यहीं रहा है यार। Revelio. ये रहा। ये क्या हो रहा है? ये रहा। मुझे लगा ही था और कुछ। Revelio. अब नहीं है। Revelio. Open up sesame. यार ब्रूम तो खरीदनी पड़ेगी यार। मैं क्विक जंप क्यों नहीं ले लेता हूँ? ब्रूम खरीदनी पड़ेगी यार इतनी दूर जाने के लिए। इतनी दूर जाना है भाई। हॉग्समेड कहाँ है? हॉग्समेड है ना? यहाँ पे ब्रूम खरीदते हैं ना? कहीं तो देखा था मैंने ब्रूम खरीदने का। नीड्स ये हो गया पोशन हो गया यहाँ पे और है भाई। यहाँ पे जंप करता हूँ, यहाँ से ब्रूम वूम खरीदता हूँ। ब्रूम खरीदने का कहीं कुछ होगा फिर उड़ते हुए जाऊंगा भाई। क्रेजी मजा आएगा उड़ते हुए भाई। जितने पैसे होंगे उस हिसाब की खरीदो। छोटी छोटी खरीदो भाई। उड़ने का मतलब उड़ना ही होता है भाई। खुद के पैसे खरीदूंगा भाई हाउसमेड में जाके। सस्ती मिल रहा है यार ब्रूम। क्योंकि हॉगवर्ट्स की ब्रूम को अपन उड़ा तो सकते हैं लेकिन लेकर नहीं आ सकते बाहर स्कूल के। कहीं ये लोग हैं स्कूल के भाई। निम्बस खरीदूंगा मैं। निम्बस 2000। निम्बस 2000। Nimbus 2000. Nimbus 2000. Oh, bro. Revelio. Revelio.
Revelio. भाई कहीं पे मिल पाएगी मेरे को ब्रूम? Broom shop, broom shop, broom shop, broom shop, broom shop. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. क्रेजी भाई, ये सब भी कर सकते हैं क्या भाई साहब? भाई मेरे को मैप दबा के चेक करने दो, मेरे को किधर जाना है। हॉग्समीड के मैप, हॉग्समीड के मैप, हॉग्समीड के मैप। ये क्या है? ओलिवांडर्स है ना? ये है यहाँ लगा। Revelio. उल्टा ही जा रहा था, बाहर ही जा रहा था मैं। Revelio. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. What else you share about brooms? Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you.
भाई सबका अपना अपना एक वो है. You'll be thrilled with that broom, I promise you. और अगर कुछ बेचना हो तो नको भाई. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. क्विडिच पिच बोला है क्या? वापस से हॉगवर्ट्स आना है? हाँ, वापस से हॉगवर्ट्स आना है. मैं इसको फ्लाई तो कर सकता हूँ ना? अब कर सकता हूँ. हाँ, अब कर सकता हूँ. Finally guys, I'm trying my first. वो इसमें पीछे आग क्यों लग रही है ब्रो? ओपन वर्ल्ड है रे, क्रेजी. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. You sound jealous. That's not what happened. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so
looking forward to seeing you lose. रेस होगी भाई को मतलब नहीं मतलब की रेस है Made it. Excellent. Missed one. अरे मैं क्या कर रहा हूँ Success. Did it. Brilliant. Made it. Ha! Good. I've got this. ले हरा दिया तेरे को तेरे ही रिकॉर्ड मेरे स्लिथरिन की बच्ची कच्ची I'm in Gryffindor bro da 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 That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Alright. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ठीक है भाई return to Albie Weeks I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Revelio.
gas station. Hello there, come on in. Plenty to look at here. A pleasure doing business with you. Let me know if there's anything else I can do to help. Revelio. Что है ऊपर? अरे यही तो चाहिए था मिशन के लिए। एक ये हो गया, एक वो बना ही लूंगा मैं। Revelio. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flights, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Revelio. पीछे से आग क्यों लग रही है भाई इसमें?
फाइनली भाई मैं ब्रूम की सवारी कर रहा हूँ गाइस, कितनी खुशी हो रही है मेरे को भाई, क्रेजी लग रहा है भाई। वो क्या है? Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. Revelio. Mind you. प्रोफेसर का वेट करना। Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the वो बुड्ढा क्या दौड़ रहा है? charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Revelio. भाई कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। ये हटाओ और कॉन्फिग को डालो इधर, फायर वाले को डालो इधर और एक्सपेलिमस Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. ये कुछ ज्यादा खतरनाक मार दिया मैंने। Ramrock said so. It won't be long now before we find another. Someone there? Nothing to see now. I've never seen a sword like it. Time to fight. Revelio.
मेरे साथ भुट्टा घूम रहा है गायब होके। अंदर क्या रखा हुआ है? Orders directly from Ranrock. I will draw blood. अरे यार बुढ़ा दिमाग खाएगा। बोला था कि तुम्हें चुपचाप करने के लिए बोला था, तुमने चुपचाप नहीं किया। तब तक भाई मैं सामान ही ले लेता। कुछ दिख रहा है? हाँ ये है ना अंदर। It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the entrance. It's locked. Protego! Confringo! कैसे खोला बे? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, Revelio. Back at the castle. Oh, ये क्या है? I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. अरे नहीं, ये वो बनाना पड़ेगा ना, क्या बोल? हाँ ये रही सीढ़ी। मुझे लगा सीढ़ी बनानी पड़ेगी रिपेयरों से। Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That's it. Be careful. Hands, I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. ये करना आता तो मजा आ जाता ना भाई। इधर है बे। ये फिर से फाइट होगी, क्रेजी फाइटिंग होगी। अरे यार फिर ऐसी ऐसी कोई जगह जाके फाइटिंग वाइटिंग होगी ना यार, फिर वो तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर इसी से तो दिमाग खराब हो जाता है।
एक नहीं आया देखने के लिए, खराब लोग हैं भाई बहुत। नहीं आ रहे वॉचिंग, बहुत कम आ रही है यार वॉचिंग। वॉचिंग वॉचिंग कमूली भाई। काश मेरी वॉचिंग 500 600 700 जाती भाई, क्या मजा आता। कमेंट्स जाते भाई 900 700 सब क्या आते, मैं पढ़ता रहता। फॉलोइंग बढ़ जाती भाई, लोग जानते कि हाँ यार I've seen this before in Gringotts and the restricted section. इनसे TREX भी कोई है भाई। रिपेयरो कर रहा है क्या, ये नीचे जा रहा है, नहीं आना। Impressive. That must have done something. Best have a look around. ये क्या है? फ्री के ग्लव्स दे रहे हैं भाई, ग्रेट। Revelio. मेरे को तो सामान कलेक्ट करने में बड़ा मजा आ रहा है। More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. बस टी दबा दो, टी दबा दो, एक सेकंड। क्या क्या रख लो, टी दबा के भाई। पहले तो ये तो रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये हटा के ये रख लो बेटा। और क्या रखना है वो सब छोड़ो, ये सब तो कोई काम नहीं आएगा, यही सब। Expelliarmus. Protego. Incendio. Confringo. थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ भाई मैं कौन से क्या पड़ता है। These look familiar. Revelio. अरे यार अब मेरे को टी दबा के फिर चेंज करो। Incendio. Accio. भाई बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है काम में यार। भागो। ओह चेस्ट, नया क्लोथ। जी क्या मिल गया? Revelio. काम का है क्या? काम का नहीं है। ओह चेस्ट वेस्ट है यहाँ पे। एक्यो था क्या? ग्लव्स मिला है। अबे गया, अबे गया, अबे बच गया। अब कहाँ जाना था?
नहीं वहाँ पे जाना था यार, एक्टिव एक्टिव करके। Revelio. एक्टिव। हाँ भैया खींचते चलो, मेरे को खींचते चलो। कुछ नहीं, पैसा मिला बस। और कल आना था फिर इसको। क्यों? More statues. बच गया। Incendio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Not making this easy on me. Accio. कहाँ जाना है? Revelio. Accio. जाना कहाँ है? Oh, okay. Revelio. Incendio. Accio. तो मुझे जाना कैसे? Complete lesson trial. Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. हाँ यार कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो करना है यहाँ पे। करना मुझे भी नहीं पता। Incendio. Accio. समझ नहीं आ रहा। I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ठीक है, इन और आउट होने से कैसा चेंजेस होता है देखें। भाई मेरे को तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा। Revelio. Accio. यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाओ। So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. तो मैं कैसे जाऊँ भाई? देखो यहाँ से आने के लिए मुझे उधर से आना पड़ेगा, उधर से आने के लिए मुझे इधर से आना पड़ेगा। उधर से जाऊँगा कैसे? समझ गया, समझ गया।
ठीक है, इधर से इधर लाओ। पहले मैं इस पे चढ़ूंगा। ठीक है, ओके मैं समझ गया। So that's it. हाँ I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Revelio. Revelio. इधर से आओ, इधर से आओ। So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. मेरा छोटा तरीका है, छोटा साइड है। So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. यहाँ पे अटक गया यार ये तो। अटक गया भाई। अरे यार मैं नहीं So कर that's पा। it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Finally, अब समझ में आ गया। देखिए। अब फाइनली बाहर जाऊँ। So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. बस मिल गया रास्ता मिल गया। एक्यो Incendio. अबे आ गया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। I'll never get used to these floors. अब कौन है भाई? चल निकल। Potato. Stupid. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Potato. Confringo. Expelliarmus. Incendio.
बच गया। Expelliarmus! Revelio! इस साइड जाना है। Protego! Accio! हैं? क्या था वो? Incendio! Accio! कहाँ से जाऊँ अब, कहाँ से जाऊँ? अरे वो बना हुआ तो कुछ आ रहा है इस पे। अब ये जा रहे हो, रास्ता नहीं मिल रहा। Revelio! कुछ तो रिवील कर रहा है ये। Accio! चढ़ना भाई। ओ कुछ तो हुआ। ओ मैं फिर गिर गया। ये क्या हुआ भाई? इंटेरिगेट करा मैं। Revelio! Accio! Accio! Incendio! Accio! मैं गिर जाऊंगा भाई। अरे हुआ क्या भाई? वो कुछ अजीब लग रहा है। वही मैं गिर जाऊंगा। समझ गया। इट्स अ ट्रिक, इट्स अ ट्रिक। मैं समझ गया, इट्स अ ट्रिक। Revelio! मैं समझ गया, ये वैसे ही वाला चीज है पहले का। रुको, समझ गया। क्या गॉट इट? इस साइड कुछ है क्या?
अबे मैं क्यों गिर गया उचक के? What the heck? उचक के गिर गया। Revelio. Accio. यहाँ से किया। फिर मैं इधर आऊँगा। ठीक है। उतरूँगा। यहाँ से गायब हो जाता है। फिर ये इधर आ जाता है। मैं इधर रहता हूँ तो ये ऐसा रहता है। कुछ तो गड़बड़ है यार। कुछ करना है, यहाँ से बनाना है, तब जाके तो मैं उधर आ पाऊंगा। ठीक है। नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। मुझे उल्टा आना। ओके, समझ गया। गोच्छा मामा, गोच्छा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा। नीचे कैसे लाऊं उसको थोड़ा सा? समझ नहीं आ रहा भाई, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई। पूरे इसको थोड़ा टाइम लगेगा भाई करने में मेरे को। भाई टी से कुछ कर सकते क्या अपन? ये कर सकते हैं क्या? नहीं, रिपेयरो है। ये क्या था? कुछ कर सकते हैं क्या भाई? इनको लगा के देखते हैं। नहीं कर सकते, वो ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा। Revelio. भाई यहाँ से तो गिर जाएगा यार आदमी। Revelio. Accio. चल जा भाई, देखो गिर जाऊंगा। ये क्या बात है? ये इन्वेस्टिगेट किया, ये खुल गया। अब भाई वैल्यू करूँगा। फिर गिर गया भाई, ये क्या बदतमीजी है। मैं गिरता ही पड़ता रहता हूँ भाई। अरे ज्यादा आगे आ गया भाई।
क्रेजी ब्रो निकाल लिया रे, निकाल लिया। ग्राइंड है ग्राइंड था भाई, ग्राइंड था भाई, ग्राइंड तो था भाई, निकाल लिया भाई। थी कर्री मेहनत करके निकाला ना भाई। फाइनली भाई थोड़ा दिमाग लगाया, मतलब थोड़ा सा अपन ने ऐसा ग्राइंड किया ना। ओपन अप सेक्शन, ये इधर जाने का रे। छोड़ो, क्या माल पकड़ना। अरे अब होगी क्लासी फाइट, आई थिंक भाई, फाइट क्लासी होगी भाई। Don't like the look of this. ओ वही मैं सोचूं भाई, मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग क्यों कर रहा था भाई। Leviosa, Revelio. Protego. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Leviosa. Leviosa. Incendio. Confringo. अबे मारना, जेट तो दबा रहा हूँ। Protego. Leviosa. Confringo. Incendio. Expelliarmus. ओह फाइनली बॉस मर गया। मत बोलो भाई। ओह Protego. Confringo. भाई इसको तो नहीं करना भाई, जाएगा भाई मैं। Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Confringo.
Confringo! Expelliarmus! ये तो बहुत कुछ अलग वाला है। भाई बहुत खतरनाक फाइट चल रही है भाई, रोंगटे खड़े होने वाली फाइट है भाई, बहुत खतरनाक फाइट चल रही है। ओ भाई रोंगटे खड़े हो गए थे भाई, रोंगटे खड़े हो गए थे, पता ही कर रहे रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। What a relief. सही में रिलीफ था भाई। Another pensive. और कुछ है क्या उठाने के लिए? दिख तो रहा है। Revelio. याददाश्त। Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. अरे भाई तो इतना सब परेशान करने की जरूरत क्या, सीधा सीधा रास्ता बना दो। इतना हाँ लोड ले रहे हैं भाई, मारा पीटी इधर उधर घूम फिरी, उड़ के इतनी दूर जाओ, आना तो एक ही जगह घूम फिर के यार, वहीं से नाश्ता निकाल दे तो छोटा सा नीचे से ही, वहीं के वहीं चले आते, वहीं के वहीं लेके आ जाते भाई। इतना घूम फिर के लेकर आना।
ज्यादा मुश्किल बना दिया है भाई इसने तो सब कुछ। Come on, dude. Hurry up. Hurry up. Oh, Professor. Tum. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Excuse me. भाई ये लोडिंग स्क्रीन तो थोड़ी टफ लग रही है भाई। अब एकदम से लोडिंग स्क्रीन कैसे लग गई भाई? जब वो पूछना चाह रहा था तब भाई लोडिंग स्क्रीन पर अटका दिया भाई। गलत है भाई। अपना ज्ञान पेलेंगे भाई। अब बोलेंगे ये करो वो करो। ये थोड़ा मेरा जॉनर की चीज आ गई थी अभी 2 सेकंड पहले। भाई और अब अपन करेंगे गियर चेंज। गियर में अपन लगाएंगे ओ मेरे पास लेजेंडरी भी है। बाकी सबको बेचने के लिए थोड़ा सा संभाल के रखूंगा। मतलब एक साथ जाके बेचूंगा। लेकिन फिर इन्वेंट्री भरती है और
क्रेजी भाई, क्या क्लासी लग रहा है भाई। वो ग्लव्स के साथ तो और सेक्सी लग रहा है भाई। इससे अच्छा तो ये लग रहा है। इसको ओपन कर देते हैं। सेल करूँगी नहीं मैं, रख के रखता हूँ। स्कार्फ दोनों एक बराबर ही हैं। Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Ha, stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. I was telling Violet just the other day, it is a joy to see स्कूल में कभी इंसानों की तरह रहा ही नहीं मैं, तभी कूदा कादी मचा रहा हूँ अंदर से। What do you mean you won't be coming home for the holidays? Darling Aunt Wilhelmina! Revelio. कहाँ बज रहा है? Levioso. कुछ तो है इसके पीछे। Revelio. Levioso. ये नहीं कर सकते। तो फिर रिपेरो, इंसेंडियो और क्या रख सकता हूँ मैं? पहले मैं Expelliarmus. Accio. Reparo. भाई ये जल क्यों नहीं रही है? कहीं इसको जलाना तो नहीं है? Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Levioso. नहीं क्या करना है? Incendio. यही करना था क्या? Levioso. Revelio. Levioso. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Revelio. कुछ तो करना है। Leave me alone, Peeves, or I'll call the manager. Levioso. Revelio. So dull. My, what a strike! You'll make quite the portrait one day.
क्या मिशन है भाई? बीस्ट क्लास, उसके बाद में है मूवमेंट। 20 क्लास चलते हैं, 20 क्लास चलेंगे भाई। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिली भाई आज। यहाँ से बाहर स्कूल में उड़ना अलाउ नहीं है ना यार। खुल जा सिमसन। Revelio. Open up sesame. Open up sesame. Oh, क्या बजा रहे? कहाँ बज रहा है? अंदर है। इस दीवार के अपोजिट है। इधर नहीं, दीवार के अपोजिट। ऊपर है, यहीं पे वो रहा। Revelio. अरे गिरना खाना। You can't imagine how inconvenient. I took my copy at 1,000. Open up Revelio. sesame. Potato. Confringo. I tried to transform your brother. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Oh boy. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. Dodo. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Poppy Don't worry Sweeting. about Professor Howen's speech. क्या She crazy name है, over-exaggerates cute name sometimes. है. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Hi, You can use Gerald. my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his... That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Do you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice.
He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Bye, graphics. बटा खतरनाक लग रहा है. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone went onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they... It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. मुझे अच्छा लग रहा है भाई इनकी केयर करके. और कोई बीस्ट है क्या? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Hey, अच्छा था, मजा आया. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Do you need something, Poppy? Thank you again.
for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Sounds interesting. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Come with me. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. जल्दी भाग भाई, जल्दी भाग. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. भाई ये क्या आ रहा है? ओह, पेगासस है क्या? नहीं. ओके, ये वो है शायद. वो Griffin. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. बाव किया भाई पहले पहले. एक और बार बाव करना है. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Oh, so cute. So cute. So, what did you think of Highwing? She was brilliant. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That sounds suspicious. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. That would be good to know. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope.
That's crazy. मतलब अब मैं उसको fly कर सकता हूँ? Still, I can't fly. This is not good भाई. मेरे को अपनी को ढूंढनी पड़ेगी. Revelio. हाँ मैं ब्रूम तो ले ही सकता हूँ उड़ने के लिए. मुझे ढूंढना पड़ेगा ना मेरे लिए जानवर. ढूंढ लेता हूँ भाई. हाय. I'd better keep an eye on High Place. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. बस मुझे यही तो करना था. मैं इसीलिए यहाँ पे आना चाह रहा था भाई. बेचारी के गॉबस्टोन्स तो उठा लूँ. एक मिशन तो कर लूँ. गॉबस्टोन्स करके फिर बंद करते हैं आज. गॉबस्टोन्स करके बंद करते हैं. बहुत देर हो गई भाई. 3 घंटा बहुत स्ट्रीम कर लिया मैंने. गॉबस्टोन्स कहाँ हैं उसके बेचारी के. गॉबस्टोन्स 6 ही कर लेना तो आराम से हो जाएंगे. मैप में देखूं और कहाँ कहाँ है. चलो भाई क्विक ट्रैवल कर करके फच 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 पहुंचेंगे. फच 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 उठाएंगे और फच 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 में खेल खत्म. Assign to your spell set. The 3 additional spell set may be purchased at other points. गाइस थोड़ा बोर हो गई. थोड़ा बोर हो गई गाइस. थोड़ा यो. How nice to see you, my young friend. ऊपर दिखा रहा है. यहीं पे दिखा रहा है. इसके भी ऊपर है क्या? Revelio. ऊपर उधर. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Professor, could you remind me of the purpose of the assignments you set for me? Seeing the future is only part of what I teach my students. They must also be prepared for what the future may hold. Hence the need for you to complete certain tasks as part of your education. When you have finished the tasks, अरे हर चीज पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। यहीं कहीं है वो। Revelio. ब्रूम नहीं कर सकते ना। कहाँ है वो बॉल? कहाँ है? Revelio. अरे बॉल ढूंढ रहा हूँ तो रिवेलियो कर रहा है पगला। कहाँ है? यहीं तो दिखा रहा था वो। अच्छा इस बिल्डिंग के बाहर है। अरे हेक भाई। I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. But they need to improve my charms marks this year. Perhaps I can find a housemate to levitate. ये रहा। Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. कहाँ गया वो पेपर? कहाँ गया पेपर? कहाँ गया? गया तो गया, पड़ गया। Open up sesame. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. कभी यहाँ ले आ रहा है, कभी वहाँ ले आ रहा है। भाई है कहाँ ये? Revelio.
Open up Sresalemi. Open a Sesame. Leviosa. बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेज़ है भाई ये, और गेम बहुत ही क्रेजी है भाई, बहुत क्रेजी गेम है भाई। Incendio! Accio! यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँ? वो ऊपर ही है। I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Leviosa. Revelio! और ये दिख भी गया मुझे यहाँ पे। Leviosa! Accio! Revelio! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. अब मैप देखता हूँ। Crazy guys, crazy. मजेदार गेम है भाई, बहुत फन गेम है भाई, मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आया गाइस, एब्सोल्युटली फन गेम है भाई।
Confringo! Accio! ऊपर जाना है ना? पर कहाँ पर? ये वाली बिल्डिंग में ना? ठीक है। यहाँ से गेट वेट तो होगा ही होगा। Levioso! नहीं है जाने का रास्ता। क्या बात कर? Revelio! क्या काइट्स उड़ रही हैं? क्या उड़ रहा है? क्रेजी भाई, कुछ ना कुछ तो उड़ ही रहा है यहाँ पे। वो लोग काइट उड़ा रहे हैं। वाह यार। मैं खुद उड़ जाता हूँ, लोग काइट उड़ा रहे हैं। शॉर्टकट मिल गया। पूरा देख के आया बाहर से कहाँ जाना है। बहुत तेज। कम ऑन। Revelio! ल्यूमिनस मार के देखो क्या इसमें। Lumos! मेरे को लगा ही था। Lumos! स्पाइडर है और ये है, ठीक है। स्पाइडर क्या आ रहा है, ये स्पाइडर आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वो आ रहा है ना, एक ही और एक स्पाइडर।
एक ये है ना, दो नाम पहले, दो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक ये। अच्छा 13 और ये है जो 21 बना रहे हैं, तो इनमें से क्या लगेगा कि ये बन जाए 21, ठीक है। एक ये अगर ये 21 के लिए है, ठीक है, 13 प्लस ये 21 कर रहा है, ठीक है। इतनी मैथ्स कॉल लगाए। I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. फाइनली भाई, मैं तो अब टीपी ले लूंगा भाई, टेलीपोर्ट कर लूंगा। मैं नहीं चला रहा भाई, तो दौड़ा भागी, नींद आ गई भाई, नींद आ गई, तो दौड़ा भागी नहीं कराऊंगा मैं। कतई नींद आ गई जहरीली। अब बस बोलो भाई जिम जाओ और जिम जाके सो जाओ। कतई जहरीली नींद भाई, कतई जहरीली। मुबारक, लेट्स गो, गेम खुल जाए। Don't get too cocky simply because you had one. Revelio. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have... Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Wonderful. It's a terrible idea. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. चलो कुछ तो दी उसने, बच्ची है, मैंने उसका इतना बड़ा काम कर दिया, कुछ तो दी होगी, गियर में फंसा ले होते हैं। लेजेंडरी है सामान, लिया वाह भाई के पास में लेजेंडरी सामान है। शायद उस बच्ची ने ये दिया है, अच्छा लग रहा है मेरे वॉन्ड में ये, लेकिन मुझे है ना ये या तो फिर ये ज़्यादा क्रेजी लगता है, पर वो बच्ची ने दी तो उसके प्यार का रख लेते हैं। एक नया क्लोक मिला था ना मुझे, ये वाला। ओह मुझे ये कब मिल गई, ये कब मिल गई मुझे?
यही मेरी क्लासिक मेरे को बढ़िया लगती है भाई। अब क्या गियर में ओ है। ये ज़्यादा क्रेजी लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ का। बाकी सब बेच देता हूँ। भाई टैलेंट्स में क्या भाई, टैलेंट्स जब से दिखा रहा है टैलेंट में सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करूँ भाई मैं? ओ वही मैं खुद बना सकता हूँ क्या? क्रेजी है। जो टैलेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास इतने, मैं बना सकता हूँ। कोर ये सब क्या है? कोर वो ओह अरेंजमेंट की चीज़ें हैं ये। और ये क्या है? कोर 2 क्रेजी। कितना लग रहा है इसके लिए? डार्क आर्ट्स भी बढ़ाते हैं ना यार। स्पेल्स बढ़ाता है। ये सब बढ़ाना चाहिए था मेरे को यार, मैंने बढ़ाया नहीं, ये सब बढ़िया हो जाता है। कलेक्शंस अभी इतने और बचे हैं। जानवर बीस्ट्स ढूंढना। एक ब्रूम है मेरे पास में, दूसरी ये है एडिशनल कंटेंट जो मेरे पास में है।
और कुछ challenges? और कुछ भाई, कुछ रह गया? और कुछ रह गया हो तो भाई वो भी देख लेते हैं. कॉम्बैक्ट, डिफीट, ये भी रह गया क्या? गियर पे होंगे ना ये सब चीजें. मिली मेरे को नहीं मिली अभी ये सब चीजें. कहाँ है कलेक्शन में थी? कहाँ, किसमें है? कहाँ है? तो पहन ही नहीं पा रहा मैं. गाइस आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव पे. होप आपको आज मज़ा आया होगा. बाय बाय, सायोनारा.